हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एकेडमी। सो आज हम बात करेंगे अबाउट ट्रिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है इन सॉल्विंग जेई प्रॉब्लम्स। सो आई विल राइट डाउन इक्वेशन, अ रैंडम इक्वेशन, और उस इक्वेशन को लेके हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और इसके मैं 2 या 3 डिफरेंट वेज बताऊंगा। So let's say you have a quadratic type of equation. So let me take a quadratic equation actually. ऐसा ax to the power 4 bx cube minus ax square minus bx plus 1 equals to 0. Let's say we have this equation, okay. And ये जो equation है, since it's a fourth degree polynomial, obviously it has 4 roots, say x1, x2, x3 and x4. एंड लेट्स से यू आर आस्क्ड कि आप मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है, लेट्स से ए एंड बी वर गिवन देयर नंबर्स। मैंने यहाँ पे बस ए एंड बी बताया है। 9 प्लस एक्स वन स्क्वायर, 9 प्लस एक्स टू स्क्वायर, 9 प्लस एक्स थ्री स्क्वायर एंड 9 प्लस एक्स फोर स्क्वायर. So let us say we have to find the value of this expression. How do you even find this? So I am going to essentially show you 2 ways to do that. And those 2 ways are going to be useful. One of the ways is going to be actually useful for this problem, क्योंकि in this problem that particular way is a much easier way to find the answer, but the other method as well is going to be very helpful, क्योंकि वो दूसरे problems में बहुत handy आएगा. तो obviously if you can solve the equation, find out the values of x1, x2, x3 and x4 by factorizing it and put the values here and then simplify, that will give you the answer. But I don't think that is the way you want to do, right? You want to solve it in the minimum possible time, and that this is what differentiates between those people who are going to score very much high in maths and in JEE overall as a result, and the people who after studying everything still won't be able to solve it in given time, and that is why these marks are going to slip away. We have to fix that, right? So what is the concept? Like, whenever you see this kind of things along with a equation given to you, you must think, what is the easiest way I can approach this? Notice this. Now notice what I'm going to do. First method. The first method can be called as transformation of equations. And I have explained this in some of my previous videos, where I say ki what is transformation of equations and how do you do that. So given this equation having roots x1, x2, x3 and x4, I basically want to find the value of this expression, right? Now this constant term 1 and this leading term a is all we need, because then we can find out the value using Weier's relations, that x1, x2, x3, x4 is nothing but this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, right? So plus 1 by a. This is guaranteed, correct? The product of the roots is always the constant term divided by the leading term with the appropriate sign according to Weier's relations. But in order to find this expression, if we can make a polynomial which has roots 9 plus x1 square, 9 plus x2 square, 9 plus x3 square and 9 plus x4 square, then if we can find the constant term of that polynomial equation, we can simply get the answer, because the product of the roots is the constant term divided by the leading term, right? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या होगा? इफ यू सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म द होल इक्वेशन इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y एंड नॉट इन x, वो जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास आएगा, उस इक्वेशन के रूट्स होंगे क्या? 9 प्लस एक्स वन स्क्वायर, 9 प्लस एक्स टू स्क्वायर, 9 प्लस एक्स थ्री स्क्वायर और 9 प्लस एक्स फोर स्क्वायर. और वो जो इक्वेशन आएगा उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो लीडिंग टर्म होगा, उसको आप डिवाइड करके यू कैन सिंपली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस. एंड येट ओके, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, बिकॉज x is root over y minus 9. You have to put in, get all the odd terms down to the right hand side and then simplify. But let us see a better method now. So now let us see the second method. So this is my equation, right? And I have to find out the roots of this equation are x1, x2, x3 and x4. और मुझे निकालना है 9 प्लस एक्स वन होल स्क्वायर, 9 प्लस एक्स टू होल स्क्वायर, वैसे करके चारों टर्म्स का. बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, यू नो कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a टाइम्स x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री और x माइनस एक्स फोर, करेक्ट? नाउ यूटिलाइज द फैक्ट कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 3i into x minus 3i, correct? Where I is obviously root over minus 1.
and this is its conjugate because x is a real number, which means this can also be written as mod of x plus 3i का whole square, right? यूटिलाइज दिस फैक्ट, यहाँ पे x की जगह पे आप बोथ साइड पे 3i पुट कर दो, क्या होगा? ये बन जाएगा a इंटू 3i टू द पावर 4 प्लस b इंटू 3i होल क्यूब माइनस a इंटू 3i होल स्क्वायर माइनस b इंटू 3i प्लस 1 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? a होल इंटू एक्स माइनस 3i इंटू ये आ गया, सॉरी 3i माइनस x1 हो जाएगा, 3i माइनस x1 3i माइनस x2 3i माइनस x3 3i माइनस x4। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, इट विल सिंपली कम इनटू सम a प्लस bi फॉर्म, राइट? दिस विल सिंपली बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि i टू द पावर 4 1 होता है, i क्यूब माइनस i स्क्वायर माइनस 1 और i तो i होता है। नाउ इफ यू टेक मॉड्यूलस होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, द राइट हैंड साइड सिंपली, क्योंकि आपको पता है कि 3i माइनस x1 का मॉड होल स्क्वायर इज नथिंग बट 9 प्लस x1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसका मॉड होल स्क्वायर शुड बी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर व्हिच इज 9 प्लस x2 स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से कि 9 प्लस x1 स्क्वायर 9 प्लस x2 स्क्वायर 9 प्लस x3 स्क्वायर एंड 9 प्लस x4 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ये जो चीज़ है इसका, ये जो भी लेट्स से ये p प्लस आई क्यू आता है, ये p प्लस आई क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये जो a स्क्वायर है जो यहाँ से है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, p प्लस आई क्यू का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और p प्लस आई क्यू क्या होगा? इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में आप 3i पुट कर दो, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। दिस इज अ मच सिंपलर मेथड, राइट? बट इट रिक्वायर्स दिस क्रिएटिविटी टू अंडरस्टैंड कि ओके आई कैन सिंप्लीफाई एंड फैक्टराइज 9 प्लस x स्क्वायर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड पुट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन टेक मॉड्यूलस। तो इस तरीके की चीज़ों को ग्रास्प में कैसे करें? ऑब्वियसली बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ सम्स इन दिस डिफरेंट वेज एंड प्रैक्टिसिंग देम ऑलवेज, लाइक एज मच एज यू कैन। तो आई विल ट्राई एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ दिस कंसेप्ट्स बिफोर द एग्जाम सो दैट क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई हैव टेकन फ्रॉम जेईई मेंस PYQs ओनली, नॉट दिस इक्वेशन बट समथिंग ऑफ दिस काइंड वाज ऑलरेडी देयर, सो आई थॉट कि चलो लेट्स explain this concept because it is useful and there are so many other concepts like this which are very useful as well. So that would be it for this video, and also the calculus mastery course and JEE Main foundation course of class 11, both of them are live. If you want to join them please check the description, और आपको जो भी कूपन्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो email me at my mail.